let us continue our lecture series, that is horticulture and gardening, SEM 5. And today we are going to continue with a new topic, that is floriculture. So the word floriculture, it is also derived from two words, flor, which is ancient Latin word, and culture. Both unite together to form the word floriculture, in line with the horticulture, sericulture, and floriculture is also related to that. It's one of those branches. So flor in Latin means flower, from which has been derived flower, or you may say flora. From flora, the word flower has been derived, the recent English word, that is flower. And culture, we all know, is it is the cultivation of or propagation of, cultivation and management of flower. So that is floriculture for all of us. Floriculture, as we all know, it is very ancient practice when there were not so many ornamentals available. So the humans, they have started using flowers as their means of expressing their feelings or their views and their imagination. So it has been in practice, or it has been in use in human civilization from ancient times. हमारे पुराने राइटअप्स में भी हमको मिलता है एक्सप्रेसिंग योर लव और एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग विद flowers and or ornamenting yourself with the floral ornaments. तो ये ancient practice थी जब use में था, but it was very personalized. Individually everyone used to create their own understanding of it. अपने यार्ड में, अपने आसपास में, whatever is available, we used to use that. Even in our country, floriculture has assumed a status of an employment or entrepreneurship quite late in our city or in our culture. Mostly it used to be like आपके घर के आसपास जो गार्डन है वहां पे आप फ्लावर्स कल्टीवेट कर दो, प्रे करने के लिए यूज करना है या गार्लैंड बनाने के लिए यूज करना है, तो लेडीज यूज टू प्लक इट, make their own things and use it. It was very personalized things to do. And slowly जो cultivation था, which was very much constrained to our home itself, has increased its level. And since not everyone is capable of doing that, so it has come to the market as well. Now since it has been exposed to so many different cultural, आप अलग अलग टाइप के फ्लावर्स ले लो, आप अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस ले लो. Someone where the white flowers are used most prominent, and sometimes even red flowers are used most prominent. So उनकी cultivation भी depending upon all these things, it changes. उसका जो वे है, देखने का नजरिया है, वो काफी चेंज हो गया है. आप पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा, बहुत खुश हो गए तो someone will bring a गजरा for the lady or for the girl. And now you see, when you are going to meet your friend or your girlfriend, so then you carry a bouquet. So change, but the main core or the main idea that flowers represent something, your feelings, this is the main core of your floriculture practice. It's a way of expressing your feelings, your emotions, whether you are peaceful, whether you are happy or stressful. So flowers can be used in any kind of situation. Now traditionally जब हम देखेंगे तो सिर्फ हमारे यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, we used to grow them in a open field. Anyone can go and pluck it and use it. या फिर ऐसा मतलब रिस्ट्रेन नहीं होता है कि इट इज हैविंग अ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस. उसको कभी अभी तक नहीं मिला था, ना ही उस स्टैंडर्ड का अभी तक ट्रेडिशनली ग्रो होता था. बट एज द ग्लोबलाइजेशन टेक्स प्लेस, एवरीथिंग इज नाउ ग्लोबल. जो यहाँ पे अवेलेबल है, आप फॉरेन में जाके देखो, इंडिया की वो सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी विद अ डिफरेंट टैग एंड विद अ डिफरेंट प्राइस. सो ग्लोबलाइजेशन हैज definitely increased your interest or floriculture as a practice and as a business. जो पर्सनल लेवल तक
जो सीमित था वो ग्लोबलाइजेशन और मोर नॉलेज या मोर माइग्रेशंस की वजह से लोग आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ का कल्चर वहाँ का कल्चर, देयर इज अ मिक्स अप ऑफ ऑल दैट. सो ड्यू टू दैट it has now attained a status of a flourishing business, the floriculture. Now, when we talk about floriculture, we all should know what important parts of it are there, and how you will define a particular branch of horticulture, a particular discipline of horticulture. So, what all it comprises of is, this is a discipline of horticulture which is concerned with cultivation of flowering and ornamental plants फॉर गार्डन एंड फ्लोरिस्ट्री. चाहे आप वो गार्डन में यूज करने के लिए यूज कर रहे हो या उसका कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर फ्लोरिस्ट्री में यूज कर रहे हो. Comprising the floral industry. Now, there is a very huge floral market, a huge floral industry flourishing. So this floriculture, it includes bedding plants, flowering plants, foliage plants, indoor and outdoor plants, that is house plants, cut greens and cut flowers. Now these all are the variety of plant material which we all can use as a part of our floriculture technique in the discipline of the floriculture, which is branch of a horticulture. So this every thing has been included in this particular discipline. I hope I am audible to all of you, and in case there is any issue with that, please just put a message in the chat box, so I'll get to know if there's any differences, difficulties in the network. So this is one of the definition of floriculture. Then a more advanced version of the definition, you may say. So it becomes a specialized branch of horticulture which deals not only with the cultivation. Now here there are certain other parameters also added to it. So it is not only dealing with the cultivation of flowers, foliage, climbers, trees, shrubs, cacti, even cacti and succulents have been included in this, but also ये सब हम cultivate करते हैं उसके अलावा, but also with their marketing and production of value added products. This is you will see कि बाकी सारे में भी हमने ये एडिशन इन द डिफिनेशन देखा है, जैसे कि आप पोमोलॉजी ले लो या ऑलरिकल्चर ले लो. It does not stops only cultivating vegetables or cultivating flowers and selling them. It also includes what different kinds of value added products you can prepare from them, how you will market them, how you will sell them, how you will propagate them. ये सारी टेक्निक्स जो आती हैं आज, वो सब आपके फ्लोरिकल्चर में इंक्लूड होती हैं. Now when I was searching for this topic, I came to know of a site. आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, there is an ITI, Institute of Technical Education in India. So it has a 1 year short-term course for persons to know this technique as a floriculture and landscape marketing. It is a 1 year course available in the site what I search for. And yes, this is a kind of a thing जो सिर्फ इंडियन सिनेरियो में नहीं, अगर आप ग्लोबल सिनेरियो में भी देखोगे तो इट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एक कमर्शियल लाइन है, सिर्फ पर्सनल यूज तक नहीं सीमित है. सो इट इज ऑल्सो द एजुकेशन इज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन दिस, जहाँ पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हो, उनका प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में जान सकते हो, how to market it, how to get certification if you are trying to do some entrepreneurship in this, what are the institutes or what are the committees which fund such kind of entrepreneurships. So that all is been available in the net if you all wish to search it and if you all try to know it. So it is not just a part of our degree course, it separately also there's a branch where in agriculture where all these are taken care of individually.
So this is related to the floriculture definition, how we can define floriculture. Now if you are talking about classification, जैसे कि हमने बाकी के lectures में देखा है, everything has to have a classification. So flowers are also classified here depending on a different criteria. Okay, different criteria हैं जिस पे classification base कर सकते हैं. Definitely ये जो भी classification हम follow करते हैं, it is more convenient base. आप अगर कुछ ग्रो कर रहे हो तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करोगे. लाइक आई एम अ ग्रोअर ऑफ फ्लावर्स, मैं फ्लावर कल्टीवेट करना चाह रही हूँ, आई हैव अ लैंड और मुझे कल्टीवेट करना है, तो मेरे लिए वो ज्यादा यूजफुल होगा जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा. सो आई विल क्लासिफाई माय फ्लावर क्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, कि विंटर सीजन में मैं ये प्लांट्स लगा सकती हूँ, समर सीजन में ये लगा सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोइंग सीजन. That we can classify it. So we can classify color dependent on the flower color, कि किस टाइप का फ्लावर है. Now every flower color has its own different meaning. ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, you all are aware of कि there is a meaning hidden to the flower what we present to someone. और different occasion में different color के flowers use होते हैं. And depending on the culture भी उनका change होता है. So if I'm looking for a particular kind of a tribe, or if I'm looking for a particular kind of a festival to come up, so then I should know which color is being more used in that particular kind of a festival. So then depending upon the color of the flower also, the segregation or the classification could be done. Then depending upon the purpose of growing, whether you are going to use for the local market, whether you have to give it in the global market, आप export करना है तो export quality का होना चाहिए, या आप बुके बनाने के लिए अगर फ्लावर यूज कर रहे हो, आपका मेन पर्पस बुके के लिए है, तो किस टाइप के फ्लावर्स आपको लगने चाहिए, या कुछ डिफरेंट यूजेस है तो उनके लिए different kinds of flowers you will require. So purpose of growing, this is also one of the criteria by which you can classify your produce. Then we may have nature of growth, how it grows, how it is propagated. So that is also one of the criteria to classify flowers, how flowers will be classified depending on the growth. Then mode of propagation, which way, whether you use bulb, whether you use flower cuttings, or it is directly sown by the seeds. So this is also one of the method by which you can classify your flowers. And then comes the nature of use. Now there are certain industries also when we talk about value added products. आप लोग को पता होगा, there is something called as the potpourri, जहाँ पे different kinds of essence of flowers, petals or herbs are kept in a pot or in a bag, and which gives scents. वो अलग अलग फ्लावर की स्मेल आती है उससे. So that is also a commercial use. If you are using for your smell purpose essential oils, then you will use flower which will have that kind of aroma. जैसे कि परफ्यूम इंडस्ट्री अगर आप यूज कर रहे हो, सो यू रिक्वायर फ्लावर जो छोटे हों चाहे बड़े हों, उसमें सेंस और स्मेल बहुत ज्यादा होना चाहिए, सेंट की स्मेल ज्यादा होनी चाहिए. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल्सो यू कैन क्लासीफाई योर प्लांट मटेरियल, माइल्ड स्मेल वाले, स्वीट स्मेल वाले और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले. सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज, या फिर आपको कलर की जरूरत है, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट पिगमेंट्स फ्रॉम द फ्लावर, then also you can classify your plant material, flower material, according to your use, what kind of use you are going to do with that material. So these are different criteria for the classification. Now depending upon the uses, the plant material could be classified into so many different categories. आप जो use करने वाले हो उसके हिसाब से. The most common use terms is the cut flower, जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट है, एक्सपोर्ट भी और इवन लोकल यूजर्स के लिए भी. सो व्हाट इज अ कट फ्लावर? नाउ हियर यू कैन सी, हियर द फ्लावर्स आर शोन एंड दे आर अटैच्ड टू द स्टेम and they are having some leaves also. So basically a cut flower is a flower which is cut with part of its stem and leaves,
एंड प्रीडोमिनेंटली इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बुके, या फिर आप डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, इकेबाना है या बाकी अलग टाइप के जो डेकोरेशंस हैं बुके देने के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुके, स्पेसिफिकली कट फ्लावर्स आर यूज फॉर this kind of a purpose, and they have a very huge market, uh, even in India and even for the export market. So this is one of the variety. And then we can have loose flowers. Now here you can see there is no stem present in the flowers. You can see there are flowers which are plucked from their plants. सो इनको हम लूज फ्लावर्स बोलते हैं, जो स्टेम के साथ नहीं होते हैं, एंड मोस्टली दे आर यूज फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस, जैसे कि आर्टिस्ट्री करनी हो या फिर गार्लैंड बनाना हो, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द गार्लैंड्स अगर आपको करने हैं, गजरा है, वेनी है, they don't require stem in the making. So all these flowers जैसे कि मोगरा है, क्रॉसरेंड्रा है या जासवंती है, ये फ्लावर्स जो आप स्टेम के साथ नहीं यूज करते हो उनको लूज फ्लावर्स बोलते हैं, एंड दे हैव गुड मार्केट इन इंडिया एंड दे हैव मार्केट इन द इंडस्ट्री एज वेल, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पिगमेंट एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर एसेंस के लिए, सेंट के लिए इनका यूज हो सकता है. So this is one of it. Then you have bedding plants. Bedding plants are usually plants which are used for their colorful flower. उनके जब flowering season होगी, so they will be full of flowers. Usually for a period of time होते हैं, जैसे कि spring flowers हैं, so they will bloom predominantly in spring. बहुत सारे blooms रहेंगे, बहुत सारे flowers रहेंगे for the decorative purpose, and then they get perished off. They are not perennial की वो हमेशा मतलब they will be blooming only for a period of season and then they are out, like they dry off, they do not bloom again. So mostly temporary use जहाँ पे भी रहता है for the display, आपको अगर display करना है, either it is garden or a temporary display है, so then these kind of flower materials are used and they are called as the bedding plants, flower beds बनाने के लिए, usually flower beds बनाने के लिए. Then we have kind of materials like foliage plants. Foliage plants are usually used for their leaves, decorative leaves, whether they are colorful leaves और उनके designs different होते हैं. So for the foliage, greenery लाने के लिए आपके बुके में या flower decoration में, these plant materials are used usually for their foliages. So they are called as the foliage plants. Then we have filler plants. Now filler plants and foliage plants, they do seem like a similar one, but filler plants have a little more strength than the foliage plant. They give a slight strength to your bouquet. आपका जो भी bouquet रहेगा आप बनाते रहेंगे, उसको hold करने के लिए जो strength की जरूरत पड़ती है, that is been given by the filler plants. Again they have the foliage. Not all filler plants will have flowers. Many are only foliages, few are with flowers, but usually the main purpose is to give a filling to the bouquet, whatever the kind of bouquet you are preparing. उसको filling करने के लिए और strength देने के लिए these plant materials are being used. Then we have line flowers. Now usually they are very small flowers. Usually inflorescence of the flower you will find raceme. You will find mostly raceme kind of inflorescence, smaller flowers, colorful flowers, which are longer than the broader. Broad कम होते हैं और उनकी लेंथ ज्यादा होती है. तो कोई भी बुके को अगर आपको लेंथ देनी है, if you want to give a length to it, लाइन देने के लिए स्पेसिफिकली ये ज्यादा यूज होते हैं आपके इकेबाना या जापानीज आर्ट में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकेबानास प्रिपेयर करने में, या जब हैंड होल्डिंग बुके होते हैं टू गिव दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ, then these kind of flowers are being used. And colorful smaller flowers, छोटे flowers रहेंगे, colorful flowers रहेंगे, so they are called as the line flowers. Then there is a use of
Now they could be used either for the ornamentation, decoration या flower shower करने के लिए, or they could be given to the industry as a by products. जैसे कि आप flowers pluck करते हो तो उनको मतलब जो भी कम यूज के होते हैं, अच्छे फ्लावर नहीं होते हैं, जिनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो या आप सेल नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन यूज देयर पेटल्स एज वेल एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर द इन द फ्लोरिस्ट्री. डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो. सो दे आर ऑल्सो इन मार्केट सोल्ड इन अ होलसेल मार्केट. दे आर ऑल्सो सोल्ड एज अ फ्लावर पेटल्स. ये सब आई थिंक वी ऑल नो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स. काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं, कैसे काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं. ओनली थिंग वी जस्ट डोंट नो देयर टर्मिनोलॉजी, वेदर दे आर इन यूज इन प्रैक्टिस और नो. So they are in practice and they have different terminologies depending upon their uses. Now there could be potted plants also, which are also part of our floriculture. Mostly ornamental or decoration purpose के लिए use कर सकते हैं. Now they could be indoor plants as well as they could be outdoor plants. They could be flowering or non-flowering, but usually they are potted plants and they are sold through the nurseries for the decoration purpose or ornamentation purpose. That's it. Now we know there are so many different kinds or there are so many different products of floriculture. Now in this topic, I am not going to teach you how to prepare a bouquet, what kind of bouquet, different types of bouquet are there, or garland, yeah, ornamentation. Now that is separately dealt with when you go to your next semester. So here we'll be just talking about what exactly floriculture is, what is its importance, and what is its scope. Do we have any scope? Now when we talk about India, India में scope की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो advantageous हैं in India for any business purpose or for any business related thing for floriculture. One of them is very important is the agroclimatic zone. आपको इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जोन मिलते हैं और इसलिए यहाँ पे जो कल्टीवेशन होने वाले जो भी हैं प्रोडक्ट्स, they are very different varieties. You can cultivate so many different varieties depending on your agroclimatic zone. आपके जोन में हो तो this is one of the advantage India has because a very varied kind of a, environment what we get. Then we can say the India is has a proximity to the export market. Singapore being the major export destination for the flowers what we cultivate, or it is in world the Singapore is the most मेजर एक्सपोर्ट मार्केट और द एग्जीबिशन मार्केट जहाँ पे फ्लावर्स की एग्जीबिशंस लगते हैं काफी बड़े बड़े. सो वी आर वेरी क्लोज टू इट एंड Europe is also a very good market where the flowers are very much in demand in their festival seasons. So this is also one of the advantage what we have in India. Now if we talk about export, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो वी हैव वेरी माइल्डर विंटर. सिर्फ नॉर्थ के रीजन्स में जो बहुत विंटर सीजन जो होता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट सो हार्श. Leaving your Ladakh and the Kashmir region, it is not so harsh as compared to the European countries. But the market for flower is much more high in winter due to the festival seasons in the European market. So we can have a very good export quality flowers for our winter season, which is not the criteria with other countries. जो एक हमें advantage मिलता है in our India. Then definitely we have a low labor cost. Now you all must be knowing that horticulture के most of the branches जो भी हैं, they demand very high labor. बहुत ज्यादा आपको ऑटोमेशन नहीं मिलेगा कि सब कुछ इंडस्ट्री में ऑटोमेशन से हो रहा है. यू रिक्वायर पर्टिकुलर एक्सपर्टीज इन दैट. यू रिक्वायर लेबर एट एवरी स्टेप. आपको चाहे प्लग करना हो, कट करना हो, सॉर्टिंग करनी हो, which is not possible with automations. So it is labor intensive market. So आपको लेबर यहाँ पर लो कॉस्ट मिलता है. We all know that
India is one of the hot destination for businesses just because you get a low cost employees over here. Though it seems ad advantage, but we should improve on it. I feel so. There should be improvement in this. Now, yes, this is something new, which I also got to know that in our financial budgets, there are certain industries or there are certain areas which are termed as a thrust area, the upcoming area. और उनमें से एक फ्लोरिकल्चर है which is listed as an extreme focus thrust area, जहाँ पर गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग कीन इंटरेस्ट कि इस इंडस्ट्री को किस तरह से और डेवलप किया जाए, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो, हाउ टू डू दैट, अगर फंडिंग की बात है तो हाउ टू फंड दैट. सो दिस इज लिस्टेड एज वन ऑफ द EFTA listings, one of the thrust area in the ninth financial planning. So this is also one of the good scope we have. And okay, depending on the what label it has been given, one of the EFTA business or the commercial business, we are able to get loans for this also. Now it does say that ki loans बहुत easily available हैं, but I personally don't have much of a good experience with this. We don't have, because banking may be you have to know exactly where to approach and which particular scheme you will be enrolled for it. उस स्कीम के हिसाब से ही फिर आपको फंडिंग मिलती है. एंड इफ यू आर एबल टू गेट फंडिंग देन डेफिनेटली दे आर वेरी लो इंटरेस्ट फंडिंग्स. अगर आपको बिजनेस के लिए एज अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए मिल रही है, सो दे आर वेरी लो इंटरेस्ट फंडिंग्स. And the nationalized banks, they have such kind of schemes to give loans related to such kind of businesses. And there are various different tax exemptions. जैसे हम क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, so there are so many tax exemptions available in India to promote such kind of activities, startup ventures. So these all are the added advantages because of which floriculture will have a very good scope, very good market in India, and for export as well. Now, what is the importance we have already talked about. There's a lot of scope, there are a lot of materials, there are so many things which we can do with floriculture, not just cultivation. Right from the cultivation, आप cultivation करने से उसका बाय प्रोडक्ट बनाने तक और उसको सेलिंग और मार्केटिंग करने तक, any of the field, any of the region you can choose where you can have your own expertise. So 3 industries, 3 viewpoints are being used or discussed when we talk about the importance. So पहला कोई किसी भी चीज का importance होता है economic importance. What economic importance it is giving to the person, to the society, or whether say to the nation. क्या इकोनॉमिक व्यू पॉइंट है, क्या इम्पोर्टेंस है. सो इकोनॉमिकली वी ऑल नो दैट export industry or floral industry is flourishing. Now it is not in the current scenario. हम era के बहुत ही अजीब सिनेरियो पे हैं जहाँ पे no industry is flourishing except your pharmaceutical industry. So we cannot say कि आज के टाइम पे क्या है, but yes, things improve. This definitely have a very good market, very good approach, economic importance. So there are so many added products also which we can use with flowers. Then there comes the aesthetic viewpoint of it. Now when we talk about aesthetics, I don't know whether you are available, पता है कि नहीं ऐसे. There is a therapist, जैसे कि आपने एरोमा थेरेपी पढ़ा होगा. I think it is there in SY. एरोमा थेरेपी, जहाँ पे आप एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं, फ्रेगनेंट यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेगरेंस, सूदिंग एनवायरनमेंट, जो आपको मेंटल पीस दे सके. फिजिकल पीस के साथ आपको मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है.
इन द करंट सिनेरियो. आजकल का जो एकदम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, एवरीवेयर यू फाइंड देयर इज अ कंपटीशन एंड यू हैव टू सक्सीड इन दैट कंपटीशन. So you don't even left with the choice. हम नहीं करना चाहते हैं, but you are not left with the choice. So the stressful mind को थेरेपी देने के लिए there is a separate branch as such called as the horticulture therapist or floriculture therapist. और ये ट्रेंड दिस इज स्टार्टिंग कि आप हॉस्पिटल्स में भी जाओगे तो देर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ओनली जो स्ट्रेस हैंडल करता है, नॉट जस्ट हाइपरटेंशन, द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो द करंट लॉट इज गोइंग थ्रू. अभी के जो जनरेशन है वो जो इस स्ट्रेस से जो गुजरते हैं उसको हील करने के लिए. सो देर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप, there is a color therapy available, there is a aromatherapy available, then there is a floral parts which are being used to enhance, or there are certain workshop. आप वहां जाओ, आपको बहुत सारा सिर्फ मटेरियल मिलेगा, यू यूज योर क्रिएटिविटी, अपना क्रिएटिविटी यूज करो एंड देन यू फील रिलीव्ड. ये हमको करने नहीं मिलता है डे टू डे लाइफ में. सो इफ एनी वन ऑफ यू हैव चांस, आपके घर में छोटा भी जगह है, गार्डन है, कुछ भी है, सो आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, लेट इट एक्सप्रेस बाय एनी वे. आजकल के जनरेशन में जो न्यूज देख रहे हैं, जो सिनेरियोज दिखता है, वो बहुत स्ट्रेसफुल है ना. देयर इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई से कि आई एम एट होम, अभी मैं घर पे हूँ. So my daughter, she sees me every time, mama घर पे है, she's at home. It's very good thing. Any child will feel कि हाँ चलो अभी we'll get more of a time. But when you see that I'm most of the time working, I'm most of the time thinking, I'm occupied, and still she get only this much of time with me. So the kind of stress she also gets, a small child of just 6 years. So yes, आज के generation के लिए you definitely require a way out of this. So what she does, वो बहुत सारा कुछ collect कर लेगी and I make her do small activities जो वो चाहे उसने कभी टीवी में देखा होगा या कहीं देखा होगा. So I make her do क्रिएटिव वे में. जब आपकी क्रिएटिव क्या बोलते हैं, यू आर व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि यस ये करना चाहते हैं और हम कर पा रहे हैं, then you are at your peace. Otherwise she will wake me up till 12 or 1 or 2 कि she is not yet done with playing with mummy. So ये stress जो होता है from the small child से जो stress होता है वो relieve करना is a must for any generation. Now you all are in TY. I may be going off track my lecture, but always find a way to let go of your any kind of stress, चाहे वो पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, किसी भी काइंड ऑफ का स्ट्रेस रहेगा तो लेट इट रिलीव. कुछ नहीं करने को अगर मिल रहा है तो देयर इज अ वेरी सिंपल वे आउट. व्हाट माय डॉटर डज, शी शाउट्स अ लॉट. अभी इनिशियली तो मुझे लगता था कि ये क्या चिल्लाती है, मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है मम्मी. सो अगर आपको ऐसा भी लगता है तो फील फ्री, कहीं भी अकेले में कोने में जाके चिल्ला लो, बट रिलीव योर स्ट्रेस. सो ऐसे एक नया हमें स्ट्रेस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत ना पड़े आगे के टाइम पे, मुझे ऐसे लगता है. सो फ्लोरिकल्चर हेल्प्स अ लॉट इन रिलीविंग स्ट्रेस इन एस्थेटिक वैल्यूज. बाकी रिलीजियस वैल्यूज तो है ही है, रेड कलर का फ्लावर चढ़ाते हैं या व्हाइट कलर का फ्लावर चढ़ाते हैं, या शिव भगवान के लिए है तो धतूरे का फ्लावर चढ़ाएंगे. सो दैट रिलीजियस टोन इज ऑल्सो देयर इन फ्लोरिकल्चर. देन सोशल, डेफिनेटली अभी किसी का बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, एनी काइंड ऑफ गैदरिंग है, तो फ्लावर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आर सोशल कल्चर. इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आर कल्चर. जैसे कि आप बोलो मुंबई में वड़ा पाव इज आर कल्चर. वी कैनॉट कितना भी पिज्जा खा लेंगे, बट यू कैनॉट लिव इन मुंबई विदाउट हैविंग वड़ा पाव. So flowers, they are part and parcel of our social life and they will remain like that. So these are certain points related to importance here. Now important industries we have already talked about. There's a perfume industry which is mostly dependent upon the
flowers, and then there is a dry flower industry whereby materials are prepared using a dry flower. You preserve them as a dried flower, so they remain for a longer time. फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं वो आप यूज करो 4 days, 3 days, 4 days or a week maximum. But dry flowers, they remain for a longer time. So this is also one of the industry. And definitely the pigment extraction. बहुत सारे जो नेचुरल पिगमेंट का अभी आजकल जो क्रेज है, पहले तो कुछ भी कलर यूज करते थे, नाउ नेचुरल पिगमेंट्स safe for us. So that's why pigment extraction is also one of the very important industries if we talk about. Now this is something related to our questions or something related to our MCQs. We should be able to have some kinds of MCQs ready for our questionnaire. So ये scenario है. Now here if there is a comparison shown over here from 2005 to 2015. Now I can see there is a slight decrease from the Netherlands. Netherlands के जो percentage में है slight decrease हुआ है, and there is one major market has come up, that is Ethiopia, which has taken the major bulk share. Rapidly growth, what we can say within this decade, एक decade का जो time है उसमें जो rapid growth हुआ है, 9% growth from a 0% in the world market is a very huge. And you all can see there is nowhere India available over here. So we still have scope. ये जो 43% है उसमें से somewhere at least India should come up at least 1%, 2%. So this is what our aim should be. So what are the different states which produce flowers? Now specifically this is related to the cut flower, which is bouquet industry or the floristry, what we call. And here also we can see West Bengal is faring quite well in the India with a 33%, and our Maharashtra is still way behind. It's only 10% of the share of the India what we have in our Maharashtra. Now this is the trend in years. Now, like we can see right now it is a slight stable towards lower side. With the 9 from 20 it has declined to 18.1 in 1000 acres. So that is slightly decreased, but we can see the flower bulbs market has decreased slowly, and what has been constant is your cut flower. Your cut flower market has been constant, and with that seedling industry has increased, seedlings for the flower beds. Puska industry, you can see it has increased from where it was in the 1985s. So there's a slight change, and we still have a lot of scope. There's been only one, a 5 years gap where the industry has flourished to a peak, but now it is more or less stabilized to a 18 or 19 score million hectares, 1000 hectares. So this is it. I think what we should know about floriculture, its important scope in India, and what are different products which could be available. So that's it for today's lecture regarding the floriculture. I hope you all understood. There is not बहुत ज़्यादा technicality नहीं है इसमें. It's simple things, but we all should know. That's it. हमें पता होनी चाहिए. Now, if you have any queries or if you have any doubts, you can ask me, or if you want to share anything, you can share with me.